guys, welcome back to my channel. I hope you're all doing well. So today I have a very exciting video to share with you guys. It's a Mr. DIY haul. Now if you don't know what Mr. DIY is, it's actually a store just like Miniso. I mean, you know the types, right? It has everything, like it has everything from crockery to home decor to plants to tools, anything and everything is there in the store. So मैंने first time visit करा था in Patiala, and if you know me, or let me just give you an example, people who know me and they have visited the DIY store, they were always like जिस दिन तू जाएगी ना तू पागल हो जाएगी, and that is very very true for me क्योंकि मुझे बहुत 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 शौक है ऐसी चीज़ों का. These small things like going to stores like Miniso, वहाँ पे अजीब सी चीज़ें होती हैं और मुझे पसंद आ जाती हैं. अगर आपने वो मूवी देखी है लेडीज़ वर्सेस रिकी बहल, उसमें जो परिणीति का कैरेक्टर होता है, दैट्स द सेम पर्सन दैट आई एम, लाइक इन द शॉपिंग कैटेगरी, मतलब मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ. आई जस्ट नीड टू शॉप. कुछ भी मेरे को हर एक जगह पे अपने लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा. इट कुड बी होम डेकोर, इट कुड बी लाइक हेयर एक्सेसरीज या फिर ब्यूटी ब्लेंडर्स, मतलब कुछ भी. मुझे सब कुछ पसंद है. मुझे क्रॉकरी तक लेना पसंद है, मुझे कप्स लेना बहुत पसंद है. आई लव इट. सो यू नो व्हाट आई मीन. एनीवेज, आई थिंक इंट्रोडक्शन के लिए बहुत हुआ. आई थिंक बहुत सारी जगह पे स्टोर्स नहीं है. दे हैव स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया, बट आई एम नॉट रियली श्योर कि आपके शहर पे होगा या नहीं. तो आई एम श्योर आप गूगल सर्च कर सकते हो एंड यू विल नो. नाउ विदाउट एनी फर्दर, ऑल्सो दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. ये सारा कुछ मैंने खुद खरीदा है बिकॉज एज आई टोल्ड यू गाइज, ये सबके लिए मुझे स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं होती. मुझे खरीदना है तो मैं खरीद ही लूँगी एंड मुझे अच्छा लगा. That's why I'm sharing it with you guys, and I know you guys wanted to see the video. I've asked you guys on my Instagram. Yeah, now that was a long ass intro. So without any further ado, let's get into the video. Alright, so just to let you guys know, मैंने 2 बार स्टोर विजिट करा है. इन पटियाला मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ पटियाला, so that's why जब भी मेरा वहाँ पे चक्कर लगता है, so I go to Mr. DIY and I'll show you guys कि मैं क्या क्या लेके आई. I have a lot of stuff. दोनों बार में मैं कुछ ना कुछ लेके आई. Let me show you guys. Okay, so starting with a very cute find. So these are the lens cases. As you can see, I bought 4 of these. These look super cute. I hope you can see, like I have different colors. Now this one is in very beautiful subtle sky blue. Let me okay, this is how you open it. So when you open it, it has a lens case. It has these tweezers and this to help you put on your lenses, and also it comes with a mirror, so that's great. Like it's very small, so you can completely put it in your sling bags and take it along, obviously. So I really like it. The quality is also really good. Let me see what was the price. Yeah, so it was priced at 51, so I think 50 rupees ka hai. I bought 4 of these. I have blue, pink, yellow and this beautiful lilac. So yeah, I think that's a very cute find. मैंने 4 क्यों लिया, I will let you know, because मेरे पास कम से कम 15 से 20 lenses हैं and I have to put them in their cases once I open them. So उसके लिए I thought it was a good purchase. Okay, मैं बहुत random order में दिखा रही हूँ आपको क्योंकि जो भी मेरे को दिख जाएगा I'll show it to you guys because I have a lot of stuff right here. Okay, next up I have this travel bottle set. This is what it looks like. Now this is very good, especially if you travel and you need to take a lot. And obviously जब आप travel कर रहे हो तो आप अपना skin care routine तो follow करते ही हो, if not करा करो. So yeah, आप अपना skin care इसमें डाल सकते हो. You can put on your body, at least even if you don't do skin care, आप body lotions और shampoos और conditioner तो लेके जाते ही होगे. So instead of carrying those bulky bottles, you can carry this. Now this was for 220 rupees. And yeah, the quality is also good. It comes in this box. Once you open it, it has these bottles and everything. Let me just zoom you guys in and show you guys. Yeah, I think now you'll be able to see the colors better. Yeah, now can you see? So now this comes with these 2 bottles first, okay, and it also comes with
spatula अगर आपको creams वगैरह transfer करनी है, and for liquids you have this. So I think it's a well thought of set. Let me show you guys what else it has. Yeah, so it has two of, okay, let me keep it right here. Yeah, it has two of these storage containers. इस पे आप अपना थोड़ा थोड़ा moisturizer वगैरह लेके जा सकते हो. I think it's very cute. And then it also has one is the spray bottle. I think it's very small and cute. अभी मैंने इस पे कुछ डाला नहीं है. Next up is this. Now I think इस पे आप अपना body lotion डाल सकते हो. It has really nice pump packaging. So I really like it. ये मैंने first time देखा था पर मैं लेके नहीं आई थी, and जब मैं second time गई तो सबसे पहले I picked this up because I was like यार ये तो होना ही चाहिए, because now I've started to travel and I feel like this is very handy. Alright, so in case you don't know, I'm a big jewelry junkie, and even if I don't put on jewelry a lot, I collect a lot. मतलब ऐसी कोई चीज़ है जो मैं collect नहीं करती, और I'm not a hoarder. No. Okay, so I bought a few of these containers for my jewelry. So first is this one. I think this was around 180-200. I'm not really sure. This is what it looks like, and it's a clear container. तो अगर आप vanity पे भी रखते हो, you can see my vanity. यहाँ पे I love putting acrylic things, and I can see it. So this one is really good for your everyday jewelry. इस पे आप छोटे छोटे से अपने earrings रख सकते हो, अपनी rings रख सकते हो. So yeah, I really like it. हाँ, इसका थोड़ा एक con मुझे लगा, since it is right here. तो अगर आप इसको खोलोगे तो आपको पकड़ के खोलना पड़ेगा, तो हो सकता है आपके छोटे छोटे earrings उस चक्कर में गिर ना जाएं. But otherwise I really like it. मेरे पास बहुत सारे ज्वेलरी स्टोरेज है, तो अभी तक मैंने इसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करा, बट इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, एज यू कैन सी. या एंड आई डू लाइक इट. और इसको अगर आप ऐसे वैनिटी पे रखते हो तो इट लुक्स रियली प्रिटी. Okay, next up I have this one. Now I'm sure you guys have seen something like this on Amazon और Meesho पे भी आपने देखा ही होगा, and I think मेरे को उससे बहुत cheap पड़ा instead of Meesho and Amazon और Meesho से. The quality is really good. Acrylic बहुत अच्छा है इसका. I do not like buying cheap acrylics from Amazon because मैंने एक आधी बार उसका drawer मंगाया था और मुझे अच्छा नहीं लगा. It was really flimsy and cheap. So I think Miniso के acrylics are really good. Similarly, I really like this. इसका भी acrylic बहुत अच्छा है. So once you open this, and then look, okay, then it has this tray. Yeah, it has this tray. यहाँ पे आप अपने थोड़े बड़े earrings या अपनी watch ऐसा कुछ रख सकते हो, which is a little bigger in size. Then on this tray, it's really sleek, so you can put on your rings, your earrings, या कुछ छोटा मोटा चीज़ें आप रख सकते हो. I really like it. Yeah, I think you can see it. Okay, then this is how it goes. इसको भी आप, I think, since it's very compact, इसको भी आप अपने travel में बहुत easily use कर सकते हो. I do really like it. Also, if you guys are interested to see my jewelry collection or how I store my jewelry, let me know. That would be a fun video to film for you guys. Okay, next up I also have these eyebrow shapers. Now this is what they look like. I got actually 3 of them, and एक मैंने already use करा, and I have these 2. Do I like it? I do, but not that much. I love the Bombay Shaving Company के face razors. वो tinkle razors भी मत लिया करो जो Amazon पे मिलते हैं, because they are not real and they are not original. So I think उससे आप अपना face harm करो, better go for a better brand. So I really like Bombay Shaving Company, and I love the Sirona razors as well. Anyways, out of the point, but this is what I have. Yes, I will use them, they are good, but I will definitely not repurchase them. And they were also very cheap. तो अगर आप try करना चाहते हो तो you can, but हाँ, ये थोड़े sharp है तो आपको cut लग सकता है, because मुझे although I have been doing it for 2-3 years, like I've been shaving my face like razor से, and still ये मेरे को 2-3 बार it has given me a cut, so that was really bad. But price wise it's really cheap. It is for 32 rupees, and you get one razor, and you also get this one extra along with it. So it's like 2 razors for 30 rupees. Yeah, so it's really cheap.
Okay, next up I have this really cute vase pot situation. Now इसमें ये थोड़ी गलती हो गई मेरे से, ये मेरे से टूट गया है. मेरी गलती नहीं है, बट आई फील लाइक ये बहुत ही, ये थोड़ा इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं लगाया हुआ था, तो एक मेरे से टूट गया. But otherwise the quality of the pot is really good. It's not ceramic, it's actually it's cement actually. Yeah, it looks really beautiful and I like the rustic feel और बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को. Like I thought I'll put it on my vanity, तो इसलिए मैं वहाँ पे रखने के लिए लेके आई थी. बट इसको मैं, it's okay, I'll glue it up. I think फेविक्विक से हो जाना चाहिए. इसमें मैं कुछ फ्लावर्स वगैरह रख सकती हूँ, और I don't know मुझे ये क्यों पसंद आया, बट मुझे क्यूट लगा तो. Okay, staying in the same category, I have this really cute vase, क्या बोलते हैं इसको. This I really love. The color is my favorite. I absolutely love the subtle pink, and then it has that cactus shape. मैं बहुत टाइम से cactus type का कुछ ढूंढ रही थी यहाँ पे रखने के लिए, and I think it looks really cute. See? इस पे मैं white flowers डालूंगी तो ये बहुत अच्छा लगेगा. I really like it. I think yeah, it's priced at 119, and I think it's pretty okay for the price, and it's actually plastic. तो ये बहुत like heavy नहीं है obviously, but I think it looks really cute और ऐसे रखने के लिए बहुत प्यारा लग रहा है. I think I love buying those knickknacks क्योंकि now that I have the studio, so मैंने काफ़ी जगह पे छोटे छोटे से racks लगाए हुए हैं, तो उन racks को fill करने के लिए I feel like these things go really well. So yeah, I do like it, and also मेरे पूरे studio की theme pink है, तो I got that. Alright, so next up is something that I've been wanting for a while, और मैंने जब भी जहाँ पे भी देखा है I felt like it was very expensive और इतना worth it भी नहीं था, तो मैंने नहीं लिया. But then मेरे को Mr. DIY पे दिख गया और मैंने ले लिया, and this is what it is. Now if you are a makeup lover, you know what it is. It's actually a cosmetic case, and you can put your brushes in it. और इस पे ना ये जो से ये poles वगैरह दिखाए हुए हैं, ये poles तो मेरे को इसके साथ नहीं मिले, but I don't know मैं इस पे क्या, I think I will put some pearls or something, but मैंने ये खोला भी नहीं है because मैं एक वीडियो बनाना चाह रही थी आपके लिए. So this is what it looks like. इस पे आप brushes डाल सकते हो, and the best part is, and why I wanted this was because this has this covering. So अगर आप brushes रखते हो vanity पे, I love putting my brushes, but बहुत ज़्यादा डस्ट गिरती है, तो ऑब्वियसली बहुत ब्रशेस गंदे हो जाते हैं, एंड देन यू पुट इट ऑन योर फेस, बैक्टीरिया एंड एवरीथिंग, यू नो द ड्रिल. So that's why I think it looks really beautiful. It looks aesthetic, plus the brushes are also kept clean, so I do really like it. This one is priced at 312. I think मेरे को ये 290 का पड़ा था. इस यहाँ पे मिस्ट्री पे जो भी MRP लिखी होती है, कुछ ना कुछ MRP से डिस्काउंट हमेशा होता है, तो मुझे आई थिंक ये 290 का पड़ा. आई गॉट दिस वन, एंड अगर आई फेल्ट लाइक ये बहुत अच्छा मतलब जा रहा है मेरी वैनिटी के साथ और मुझे थोड़ा फंक्शनल लग रहा है, देन आई विल बाय मोर ऑफ दीज फॉर श्योर, बिकॉज क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. एक्रेलिक इज रियली नाइस, एंड आई थिंक 290 का इट्स टोटली वर्थ इट. इट्स प्रिटी गुड, प्रिटी एस्थेटिक. और अदरवाइज मैंने जितने भी देखे थे अमेजोन पे या इंस्टाग्राम स्टोर्स पे, दे वर वेरी एक्सपेंसिव, लाइक thousands and 2000 for just one case, and I think this one is definitely worth it, right? Okay, so next up is the cutest find. It is this photo frame. Look at the color, the shape. I love the heart shape. I absolutely fell in love with it जब मैंने पहली बार देखा. और ये मैंने बाहर से पकड़ा हुआ because I have a picture in the frame that I don't want to show. Anyway, so this is what it looks like from the back. ये आप आराम से टेबल पे रख सकते हो. Let me show you guys. तो कुछ ऐसा रखा जाएगा अगर मैं तो कुछ ऐसा रखा जाएगा अगर मैं ये पेपर छोड़ दूँ, बट इट लुक्स रियली प्रिटी. एंड ये भी प्लास्टिक है, नॉट सुपर स्टर्डी, बट आई थिंक लुक्स वेरी एस्थेटिक एंड सर्व्स द पर्पस, सो आई रियली लाइक इट. ये ग्लास नहीं है एक्चुअली इसके ऊपर, एज यू कैन सी दिस इज नॉट ग्लास, दिस इज plastic that comes with frames that are more affordable, right? So this was for just 105, so I think बहुत प्यारा है, loved it. तो अगर आपको मिले तो प्लीज़ टेक इट. इस पे काफ़ी सारे कलर्स थे, इट हैड ब्लू, सी ग्रीन एंड एवरीथिंग, और अब अगर मैं दोबारा गई तो आई विल बाय मोर ऑफ दिस. So we are back to a wider frame because I had to show you guys this beautiful thing that I saved for the last. This is so pretty. Now this is, okay, I have to, let me just put one aside. Okay, so this is what it looks like. Yeah, so this is like a photo hanging thing.
एंड इस पे आप अपनी फोटोज हैंग कर सकते हो, और दे हैव गिवन लाइक अ इंस्पिरेशन सॉर्ट ऑफ थिंग. तो अगर या सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. ये सब मैंने अमेजोन पे ऑलरेडी देखा हुआ है, बट वहाँ पे भी ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो मैंने कभी भी नहीं लिया. आई थॉट इट वाजंट वर्थ इट. इस पे वाइट भी था और डिफरेंट शेप में था, बट आई थिंक ब्लैक ज़्यादा सूट कर रहा था, ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा था. एंड आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट साइज. कैन यू सी? या दिस इज़ सफिशेंट साइज. ये इसके साथ क्लिप्स भी आए हैं. आई विल शो यू. So these are the clips that they have given, but I think clips तो already बाहर भी stationery पे मिल जाएंगे. So I will hang my pictures in it. So I not my मतलब whatever जो भी pictures मेरे को hang करने होंगे, I will hang it in this. I think it looks really pretty. So I love it. Also मैंने दो इसलिए लिए बिकॉज माई फ्रेंड्स बर्थडे इज़ कमिंग. सो मैं सोच रही थी इस पे मैं पिक्चर्स वगैरह अब हम दोनों की लगा के, एंड आई विल गिफ्ट it also to her. So I think it's a pretty very beautiful personal idea. I just thought so. I thought I'll take that. Yeah. Anyways, so this is what it looks like. इसकी क्वालिटी भी अच्छी है. It's not super heavy as you can see. मतलब अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ले लिया. I think this was for 300 each or somewhere around. Yeah, I think it was 300 k around. Alright guys, that's it for this video. I really hope you guys enjoyed it. If you did, then make sure you let me know in the comments, and also like this video and subscribe to my channel if you want to watch more such videos. I will see you guys in my next one, and I love you so much.